So within this right to freedom, we have right to life and personal liberty as well, which we have already discussed in article 21. So since this text is way too light for you to read from the video, so let me just generally explain you. So in this case they are saying, if we have right to life and personal liberty even when it comes to arrest, okay? So even when a police come to arrest us, they need to give us a proof, on they need to give us a justification that on what grounds are we arrested, okay? So let's suppose if I'm arrested, so I at least need to be aware that, okay, what is my crime, or what have I done, or why are you taking me for investigation. Also, if I'm arrested, I have the right to actually defend myself. How? By having a lawyer of my own choice, okay? I can have a lawyer of my own choice, and within that the police has to take to, if the police has arrested me, has to take to me to a magistrate within 24 hours. Like let's suppose the police has arrested someone at 4 p.m. so till next day 4 p.m. they need to take the arrested person to magistrate is never a part of police, okay? So magistrate हमेशा डिसाइड करते हैं क्या जो अरेस्ट है वो सही है, क्या उसका ग्राउंड सही है, या जिस भी रीज़न के लिए आपने उन्हें अरेस्ट किया है अरेस्टेड पर्सन को, क्या वो फेयर है. अगर मैजिस्ट्रेट को किसी भी लेवल पे लगता है कि वो अरेस्ट फेयर नहीं है, सो द पर्सन कैन बी रिलीज. और फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ उनको लगता है कि नहीं अरेस्ट सही है और सर्टन इंक्वायरी नीड्स टू बी देयर, सो द पुलिस इज़ गिवन अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम अरेस्ट, द सुप्रीम कोर्ट has ruled that this right also include right to live with human dignity free from exploitation. Now let's suppose a person is arrested just because कुछ evidences हैं, but हो सकता है उस person ने वो crime ना किया हो, but investigations होती है, remands होती हैं. So this right says that even if someone is arrested, उनके पास human dignity है, उनके पास dignity होनी चाहिए. While there is a period of arrest, exploitation नहीं होना चाहिए. The court has led that right to shelter and livelihood is also included in the right to life because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood. अब हम बात कर रहे हैं that everybody is equal और हमारे पास जीने का अधिकार है. So सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं when we are talking about right to life, अब राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड तो तभी होगा व्हेन आई एम हैविंग एटलीस्ट शेल्टर, अ प्लेस टू लिव, एंड ऑल्सो लाइवलीहुड व्हेन आई एम एबल टू अर्न बेसिक फॉर माई सेल्फ एंड एटलीस्ट एबल टू सर्वाइव, ओके. सो अगर मेरे पास जीने का अधिकार है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास शेल्टर भी होना चाहिए, प्लस मेरे पास एटलीस्ट बेसिक अमेनिटीज़ लाइक फूड भी होना चाहिए, ओके. Plus I need to be, since I am a human, I need to have a dignified life and I should be free from exploitation. So this is how right to freedom is being explained here. Firstly, it was written that how equality and freedom can never be separated. If we are practicing equality, we will also practice freedom, and if we are practicing freedom, we will also practice equality. Then they are talking about right to life. अगर मेरे को जीने का अधिकार है, so कैसे अदर थिंग्स भी उसके साथ एसोसिएट हो जाती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल. एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड जितनी भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, ऑल द राइट्स देयर मीनिंग चेंज ओवर टाइम. लाइक इफ़ आई एम सेइंग राइट टू लाइफ, सो इनिशियली इट यूज टू बी कि मुझे बस जीने का अधिकार है, ओके. बट लेटर ऑन इट चेंज, नाउ इट इज़ चेंजिंग टू इवन शेल्टर, क्लोथ्स, बेसिक अमेनिटीज़, ओके. नाउ यू कैन इवन से दैट टू लिव I need to earn, and in order to earn I need to be educated. So your right to education is also linked to your right to life indirectly, okay. Then we were talking about personal liberty. Personal liberty में यहाँ पे स्पेशली एक रेफरेंस दिया है अरेस्ट का. That means I have a personal life, so even if you are arresting me, it is important for you to tell me that on what grounds I am being arrested, okay. So next is your topic regarding preventive detention, which is very important, which I will discuss in the next video.